Okay, so last time हमने already coefficient of cubical expansion, coefficient of areal expansion और coefficient of linear expansion ये तीनों देखा था और उनके formulas भी हमने derive किए थे, right? और हमने ये देखा था कि coefficient of linear expansion is defined as the change in length of a linear body per unit original length per unit degree rise in temperature. So अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता है? हमने देखा था डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, करेक्ट? और इसके साथ हमने और एक फॉर्मूला देखा था बीटा के लिए. तो बीटा इज द चेंज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ aerial expansion or superficial expansion, we can say, which is defined as the change in area per unit original area at 0 degree Celsius and per unit degree rise in temperature of the body. And this is valid only for planar bodies, just like flat bodies, which have area only. Thickness is very small. And also we have seen the coefficient of cubical expansion, which is defined as the amount of change in volume per unit original volume per unit degree rise in temperature. So these are the formulas for alpha, beta, and gamma. Okay. Now we can just try to find out the relationship between these three. Okay, that is alpha, beta, and gamma. So let us go to the board. Yes, I hope you can see this board. Okay, so here let us talk about the relationship between alpha, beta, and gamma. So first of all, we'll just try to find out the relation between alpha and gamma only. Sorry, alpha and beta first. So alpha और बीटा के बीच में रिलेशनशिप हम डिराइव करेंगे. उसके बाद फिर हम बाद में चल के अल्फा और गैमा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो भी डिराइव करेंगे. ठीक है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल consider a rod or not rod, consider a area or a flat body which is in the form of a square. Okay, ये square form में इसको imagine करो. Suppose this square is having the length L naught. Okay, each length is L naught. तो देखो यहाँ पे initial length जो square का है तो वो L naught है, ये हमने ऐसा मान लिया. Yes, but suppose that this square is having the area A naught initially, means at 0 degree Celsius. तो ये पूरा जो है वो 0 degree Celsius पे है, हम देख सकते हैं आराम से. But now suppose that this square plate is just heated and due to heating it just expands. So we can just see that this is its original shape whose length is L naught. Each length is L naught and area is A naught, suppose. But now its length is increased. Okay, so उसका length जो है वो बढ़ जाएगा. So we can just show this increased length here in this way. This is the increment, we can say. Okay, so this is the increment in the area. So even if this much is going to be A naught, but this whole total area here is actually going to be AT, where AT stands for the area at T degree Celsius temperature. Means high temperature जो है जब हमने उसको हीट कर दिया तो T degree Celsius पे उसका एरिया कितना बन गया 80. No doubt its length will also be increased. बिल्कुल जरूर उसका जो लेंथ है तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. We can call it as LT here. Okay, this is LT, and even this length also will get increased. So LT can also be increased here in this way. Every length is increased, and that's why its area itself is increased. Okay, so now we can just talk about now the
फॉर्मूला फॉर लीनियर एक्सपांशन. सो लीनियर एक्सपांशन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो हमने ऑलरेडी कल प्रूव किया था कि द फाइनल लेंथ एल टी हियर कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू एल नॉट into bracket 1 plus alpha t. Do you agree with this? So this is the expression for the length at high temperature if we know the length at 0 degree Celsius temperature here, L naught. So LT has been expressed in terms of L naught in this way. Okay. Now we can just express this AT also. तो area के बारे में अगर हम देखेंगे तो final area is AT and initial area is actually A naught, right? So we can just see that AT and A naught are actually denoted or related by the relationship that is AT is equal to A naught into 1 plus. अब यहाँ पे अल्फा नहीं बल्कि बीटा आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बीटा इंटू टी इस तरह से लिख सकते हैं आराम से. बिल्कुल. So see here we have expressed this L naught LT in terms of L naught and also we have expressed this AT in terms of A naught. Okay. So अभी जैसे ही हमने ये एक्सप्रेस कर दिया तो उसके बाद अभी हम ये समझ सकते हैं कि देखो if we just square on this both the sides of this equation here, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर कर देंगे, इसको चाहिए तो नंबर 1 लेके रख दो पहले and then we can just square on both sides. Okay, so if just square on both sides then we can be able to get that. तो यहाँ पे इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो वो हमको LT square मिल जाएगा, no doubt. So here we can just get this as LT square. Okay, and here it can become this L naught square and also the bracket is squared. So 1 plus alpha t का whole square हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. अभी सोचो ये स्क्वायर हमने क्यों किया? क्योंकि हमको पता है कि LT का स्क्वायर मतलब क्या. देखो यहाँ पे if you consider this area of area square plate of area AT whose each side is having the length LT. तो अगर उसका each side यहाँ पे ये LT है और ये LT है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ये हमको पता है ऑलरेडी. स्क्वायर का जो एरिया है वो हमेशा उसके साइड के स्क्वायर के बराबर मिलता है. तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया AT कितना होगा एक्चुअली LT के स्क्वायर के बराबर होगा. और ओरिजिनल जो एरिया उसका है जिसको हमने ऑलरेडी A naught बोल के रखा है. So how much this A naught will be actually equal to? So A naught can be written to be simply equal to L naught square because it is also the square ना. तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है हमेशा उसके साइड के स्क्वायर के बराबर हुआ करता है. तो इसलिए उसका साइड तो L naught है, इसलिए उस साइड का L naught का स्क्वायर अगर करेंगे तो उससे हमको एरिया मिल जाएगा उसका. तो A naught can be expressed as L naught square and AT can actually be expressed as LT square. Correct है. And hence we can just get this as, so we can just replace now and hence we can just say that here LT square actually becomes AT. Okay, and also L naught square here actually becomes A naught, right? And we can just expand this. Okay, but here we can just see that one more thing is to be understood here that देखो यहाँ पे, but we can say that this LT square is actually going to be AT and L naught square can be written to be simply equal to A naught, that is the area. And also see when there is a binomial approximation. Okay, you must have been seen in the binomial theorem in maths. 1 plus x the whole raised to n is approximately equal to 1 plus nx. Do you remember this? And this happens only when x is very, very small. Okay, then 1 obviously. तो अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है तो ऐसे केस में 1 plus x raised to n का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 plus nx के बराबर बनता है. इसको बोलते हैं binomial approximation. That means, for example, if we have 1 plus x the whole square, it will be approximately equal to 1 plus n 2x simply. तो ये होता है. Even 1 plus x the whole cube actually, तो 1 plus x का the whole cube जो है वो approximately किसके बराबर होगा? 1 plus 3x के बराबर हुआ करता है. So this is actually called as the binomial approximation. ठीक है ना? Which can be used only when alpha is going to be very, very small than 1.
So in this case here, we can just, x is going to be very, very small than 1. Here you can just see that this alpha t is the third term, second term in the here, 1 plus alpha t यहाँ पे है. So this alpha t is actually going to be very, very small. As we have just seen last time, we already found out the value of alpha and found that this value of alpha happens to be in the range of 10 raised to minus 5. मतलब हमने कल, अगर आपको याद है, तो कल हमने ऑलरेडी अल्फा का एक वैल्यू भी निकाल के दिखाया था आयरन के लिए. ठीक है ना, आयरन के लिए अगर हमने वैल्यू निकाला तो वो हमको पता चला कि वो 10 raised to minus 5, एक्चुअली इट विल बी 2 into 10 raised to minus 5. तो इस छोटे ऑर्डर में वो हमको मिलता है, इतना छोटा उसका वैल्यू हुआ करता है अल्फा का. तो ये इस बात सामने रख के हम ये बिल्कुल डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू टी इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी, वेरी स्मॉल. सो वी कैन जस्ट यूज द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इन दिस केस हियर. तो यहाँ पे अगर हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा ये जो 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1 प्लस 2 अल्फा इंटू टी लिख सकते हैं. देखो समझा कैसे? क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो सीधा सामने यहाँ पे जंप करेगा. इन द सेम वे एज this 1 plus x the whole raised square can be written as 1 plus 2x approximately. Okay, तो ये जैसे हमने 1 plus x the whole square को 1 plus 2x के साथ approximate किया, सेम वैसे ही हमको यहाँ पे 1 plus alpha t the whole square को हमको 1 plus 2 alpha t के साथ approximate करना है. तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे उसका वैल्यू तो हमको ये मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में lt स्क्वायर के बदले आने वाला है at, जो कि ए नॉट के बदले आने वाला है, सॉरी एल नॉट स्क्वायर के बदले आने वाला है ए नॉट, और ब्रैकेट में जिसको हमने 1 प्लस अल्फा टी द होल स्क्वायर यहाँ पे डिनोट करके रखा है, तो वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके क्या बनेगा, 1 प्लस 2 अल्फा इंटू टी बन जाएगा. करेक्ट है? नाउ वी कैन जस्ट कंपेयर दिस विद द ओरिजिनल इक्वेशन वी ऑलरेडी हैव फॉर एटी हियर. तो एटी के लिए हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? Yes, if you just see here, then AT can be written to be simply equal to AT is equal to A naught into 1 plus beta T. ये ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है. If you just compare with this one here, तो यहाँ पे हमको जो मिला हुआ है, तो इसको अगर चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो, या चलो 2 देके रख देंगे, और ये वाला जो है इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे या 3 दे देंगे, चलो, तो फ्रॉम 2 and 3 व्हाट कैन वी से? If you just compare these two equations, then AT is already on its own place. You can see here, ये AT जो है वो अपनी जगह पे है यहाँ पे, और यहाँ पे भी AT है. देखो ठीक से, A नॉट भी अपनी जगह पे है ब्रैकेट के बाहर. ये देखो इधर भी A नॉट है, इधर भी A नॉट है. Even 1 is also already on its own place. See it here, 1 is also already there. But here coefficient of T is actually beta here, whereas the coefficient of T in this case here is actually going to be 2 alpha. Can you understand this? यहाँ पे coefficient of T कितना है? 2 alpha के बराबर है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे बीटा का जो रोल है वो यहाँ पे 2 alpha कर रहा है. So therefore we can just say that this from 2 and 3 beta can be written to be simply equal to 2 alpha. Okay, so this is actually going to be the relationship between alpha and beta, which tells us simply that beta is actually equal to double of alpha in this way. Okay, then again now we can just try to find the relationship between alpha and gamma. Okay, just wait and just go through this expression which you have just done now. If you have some doubt, we can just talk or just put it in the chat box. Okay, is there any doubt about this?
Okay, so let us go to the next derivation now. That is about finding the relationship between अल्फा एंड गैमा इन दिस केस. ओके, तो अल्फा और गैमा इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है तो वो हम अभी डिराइव करेंगे. Okay, so let us start. Now we want to find out the relationship between alpha and gamma. Okay, so the same technique is to be used here. Now see here, suppose ये एक क्यूब हमको कंसीडर करना है. Just consider a cube. Yes, we want to find out the relation between alpha and gamma. So see here, consider a cube first of all. Suppose this is the cube. Whose each length is going to be L naught here. Okay, हर एक लेंथ उसका जो है वो L naught है और उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है तो वो मान लेते हैं V naught है. ठीक है, दिस इज ओनली एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सब है. ठीक है, बट सपोज वी गो ऑन हीटिंग इट. Suppose it is heated at T degree Celsius now, and because of that, its volume expands or volume increases. So volume will increase because its every side will increase in length. तो हर एक लेंथ उसका इंक्रीज होगा. इस तरह से हम ये देख सकते हैं आराम से. हर एक लेंथ इंक्रीज हो गया और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट इट्स लेंथ at T degree Celsius becomes LT. Each length increases by the same amount and becomes LT finally, and its volume finally can be written to be VT. This is going to be at T degree Celsius, whereas this was at 0 degree Celsius. Okay, now see here, if this transformation takes place, so in if we just try to relate this final length at high temperature with the original length at 0 degree Celsius, then we can just get the same relationship, that is LT is equal to L naught into 1 plus alpha T. Okay, तो ये इक्वेशन हमको फिर भी इसमें से भी मिलेगा, नो डाउट. लेकिन अगर हम फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर यूज करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो इक्वेशन हमने यूज किया था, डिराइव किया था कल, तो वो अगर हम यूज करेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमको. तो देखो, VT, that means the final volume here is actually going to be equal to V naught into 1 plus gamma into T here, where gamma is called as the coefficient of cubical expansion. Okay, तो इस तरह से ये हमको मिलता है. Yes, so once we get these equations, we can just give this equation number 1 and can give this as equation number 2, so that we can just use this for comparison later on. Okay, so if you just solve this and now just let us cube on both sides. ठीक है, दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर देंगे तो क्या होगा देखो से. So if we just make the cube on both sides, then LT का क्यूब जो है तो वो हमको मिल जाएगा LT क्यूब इस तरह से. L naught का जो क्यूब है तो वो हमको मिलेगा L naught क्यूब in this way, and 1 plus alpha T का क्यूब, which is just kept as it is here in this way. And now we can just get that, but here LT cube can be written to be equal to VT. That means because it's a cube ना, तो ये जो क्यूब होता है इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है. सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम हमेशा उसके लेंथ के क्यूब के बराबर हुआ करता है. ये जो क्यूब है अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो V naught जो है, दिस V naught is actually going to be L naught का क्यूब. करेक्ट है, क्योंकि क्यूब हैज 3 साइड्स. एक्चुअली अगर हम देखेंगे कोई भी बॉक्स जो होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह का, उसका वॉल्यूम कितना होता है. तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. करेक्ट है, तो L B into H. बट फॉर द क्यूब ऑल these 3 लेंथ्स आर सेम. दैट्स व्हाई
we can just multiply this length by length by length, and this length multiplied 3 times actually becomes the cube of that length. And that's why we can just understand that the volume of a cube becomes actually cube of its length. ये अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है? Volume of a cube is always equal to cube of its length. So according to that relationship, what we can get is V naught is going to be actually L naught cube. ये समझ सकते हो ठीक से? So we can say here, but V naught is going to be L naught cube. And at the same time, जो फाइनल वॉल्यूम है, अब देखो इसको जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ा देंगे तो वो एक्सपांड हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो तो क्यूब ही रहेगा ना, एक्सपांड होने के बाद भी वो क्यूब ही रहेगा, और क्यूब होने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो उसके उस समय के जो लेंथ के क्यूब के बराबर हुआ करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है वो उसको हम VT बोल सकते हैं। सो VT विल एक्चुअली बी इक्वल टू LT का क्यूब, समझ सकते हो ठीक से, LT का क्यूब। And also one more thing we have to introduce here, that is the binomial expansion, binomial approximation, 1 plus alpha t का whole cube जो होता है, so this can actually be written to be approximately equal to, तो इसको हम approximately क्या लिख सकते हैं, 1 plus simply ये 3 जो है वो यहाँ पे सामने जंप करेगा, जिसकी वजह से वहां पे वो 3 times of alpha t बन जाएगा. So we can just understand that this will be 1 plus 3 alpha into t. Okay, so this is the binomial approximation. You can use it here, so that in the next step we can just get this LT cube replaced by VT. Simply this L naught cube can be replaced by V naught, and 1 plus alpha t whole cube can actually be expressed as 1 plus 3 times of alpha t, which is the binomial approximation. And now just compare this with the expression for volume due to temperature, which we already have it here. तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसके साथ अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखो ठीक से, VT is equal to V naught into 1 plus gamma t, इसके साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको। ये देखो VT अपनी जगह पे है, ठीक है, V naught भी अपनी जगह पे है, 1 अपनी जगह पे है, इवन T भी अपनी जगह पे है। The only difference here is that the coefficient of T, which is actually coefficient of T, which is actually 3 alpha here and which is actually gamma here. So we can just compare this and these two equations and get that 3 alpha is equal to gamma, जिससे हमको मिलता है कि gamma is equal to 3 times of alpha. So this is the relationship between gamma and alpha, and this is the relationship between beta and alpha, we can say. That means beta is precisely double of gamma, sorry, alpha, and gamma is actually triple of alpha. So these are the relationships between these two quantities, that is alpha, beta and gamma. अभी इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम देख रहे हैं आराम से कि ये जो अल्फा है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन है, बराबर कॉमन है, इसलिए ये कॉमन वैल्यू अल्फा का जो वैल्यू है वो यूज करके हम तीनों के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, बिकॉज सिंस अल्फा इज कॉमन, वी कैन जस्ट से दैट दिस अल्फा कैन बी रिटन एज, यहाँ पे इसमें अल्फा इसको हम लिख सकते हैं बीटा अपॉन 2, करेक्ट है, और इधर अल्फा का वैल्यू जो है वो निकाल के रख सकते हैं gamma upon 3 actually, correct है. So alpha is equal to gamma upon 3 from this, and here alpha is actually going to be beta upon 2 here. So if we just equate these two values of alpha, then we can just get that alpha is equal to beta upon 2, which is equal to gamma upon 3. Okay, so this is the relationship between alpha, beta and gamma. We can just show this relationship in the next page here. So we can just get that alpha is equal to beta upon 2, which is actually going to be equal to gamma upon 3 here. So this is the relationship between alpha, beta and gamma. Or even if we just multiply this whole thing by 6, then we can just get this 6 alpha
is equal to 6 times of beta upon 2, which is going to be equal to 6 times of gamma upon 3. So that here 2 ones are and 2 threes are, it becomes 6, and 3 ones are, 3 twos are, become 6, and hence we can just say that this 6 alpha is going to be 3 beta is equal to 2 gamma. So this is also the relationship between alpha, beta and gamma. So that any one of them, if it is given, then we can just get the other two. Okay, अगर एक भी दिया हुआ है तो बाकी दोनों हमको मिल जाते हैं आराम से. ठीक है, अगर अल्फा दिया है तो उसको डबल करके हमको बीटा मिलेगा, ट्रिपल करने से गैमा मिलेगा. अगर गैमा दिया है तो उसको 1/3 करने से अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा मिल गया तो बीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. और इवन अगर बीटा दिया है तो उसको आधा करने से अल्फा मिलेगा. वंस वी गेट अल्फा वी कैन गेट एवरीथिंग. ठीक है, बीटा एंड गैमा आल्सो. So therefore these are the techniques to find out alpha from beta or from gamma. Yes. Let us take understand one simple example. एक simple सा question हम करेंगे so that we can understand this relationship in a better way, and also one important concept. इस concept, इस question के अंदर हम और एक important concept हम understand करने वाले हैं. देखो ठीक से. Suppose there is a rectangular plate which has a hole of area, ठीक है, or you can say a square plate. चलो, square plate has a hole of area 40 centimeters square. Okay, at 0 degrees Celsius. Yes. Okay, then find the area of that hole at 80 degrees Celsius if coefficient of linear expansion of material is 5 into 10 raised to minus 5. Okay, it's given. Yes. So let us try to find it out. See here, the area of the hole is given to be 40 centimeters square, and that is also at 0 degrees Celsius temperature. Okay, but we want to find out the size of the hole at 80 degrees Celsius temperature, and the linear expansion coefficient is already given. Okay, so let us try to find it out. See here, the important thing to understand here is that even if it is a hole, okay, यहाँ पे ये hole है, मतलब यहाँ पे आजू बाजू में ये जो है, आजू बाजू में मटेरियल है, और ये होल के अंदर कुछ भी नहीं है. मतलब होल मतलब वो खाली स्पेस है कि नहीं, एम्प्टी स्पेस है. सो दैट मींस दिस होल इज ड्रिल्ड इन दिस स्क्वायर मेटल प्लेट. तो मेटल प्लेट के अंदर ये इस तरह का होल हमने यहाँ पे ड्रिल करके रखा हुआ है. और अभी इस होल को जब हम हीट करेंगे, मतलब इस पूरे मेटल प्लेट को जब हम हीट करेंगे, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, ना सिर्फ मेटल प्लेट का एरिया बढ़ेगा, बल्कि इस होल का भी एरिया बढ़ जाएगा. ये समझो ठीक से. और होल का जो एरिया है वो एग्जैक्ट उतना ही बढ़ेगा जितना, अगर हम इसको अगर एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे भी मटेरियल भरा हुआ है, ऐसे अगर हम एज्यूम कर लेंगे, if suppose the material is filled in this hole, then whatever is the area of this hole, we can just consider this area to be the area of that metal plate of that size. Okay, तो मतलब यहाँ पे वैसे तो इस होल के अंदर कुछ भी नहीं है, but we can consider this hole to be made up of material. Same material is just included in this hole, and suppose that if temperature is increased, then ऐसे ही वो बिहेव करेगा जैसे कि ये होल भरा हुआ है, मटेरियल से भरा हुआ है. और अगर वो मटेरियल से होल भरा हुआ होता तो वो जितना एक्सपांड करता उतना ही एक्सपांशन उसके अंदर होगा, और उसका जो फाइनल एरिया है वो भी हम उसी फॉर्मूला से निकाल पाएंगे जिससे
एक्चुअली उस होल के साइज के मटेरियल का एक फाइनल एरिया हम निकाल पाएंगे उससे। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, AT इज इक्वल टू A0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। और यहाँ पे अभी AT तो हमको निकालना है, A0 दिया हुआ है। अभी भले A0 मतलब यहाँ पे क्या है, होल का एरिया है, तो वो और होल के अंदर कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हमको यहाँ पे उसको पुट करना है। तो इट विल बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट फॉरगेट अबाउट द यूनिट, we can just get the same unit here for AT also. Now 1 plus alpha t, here alpha is actually going to be 5 into 10 raised to minus 5, and t here is given to be 80 degrees Celsius. So we can just put it here and get the next step, that is 80, that is the area of the hole at 80 degrees Celsius temperature will actually be equal to 40 into 1 plus, हाँ हाँ हाँ, और एक बात यहाँ पे हमको यहाँ पे बीटा यूज करना है कि नहीं, क्योंकि वो एरिया है, लेंथ तो नहीं है। तो इसलिए एरिया के फॉर्मूला के अंदर क्या आता है, बीटा आता है, बराबर। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो बीटा बीटा का वैल्यू यहाँ पे हमको चाहिए, लेकिन बीटा दिया है क्या, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीटा के बदले 2 अल्फा डालना पड़ेगा, सो दैट वी कैन जस्ट गेट दिस फॉर्मूला एज A0 इंटू 1 प्लस 2 alpha into t, because we already know that beta is going to be 2 times of alpha, and this given here is alpha. Actually the coefficient of linear expansion of material is 5 into 10 raised to minus 5, मतलब वो अल्फा हो गया। तो अल्फा का वैल्यू 5 into 10 raised to minus 5 दिया हुआ है, obviously per degree Celsius it will be okay. So if we just want to find out beta, then we'll have to double it. So इसको डबल कर देंगे तो हमको बीटा मिलेगा। So accordingly 2 into 5 into 10 raised to minus 5 will actually come out to be 10 into 10 raised to minus 5. So we can just have this here replaced here. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये बीटा का वैल्यू डालना है, ना कि अल्फा का। ओके, तो उससे हमको ये नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, देखो ठीक से। So if we just put the value of beta here, which is 10 into 10 raised to minus 5, and then multiplied by temperature 80 degrees Celsius, then we can be able to get that this will be 10 into 80 becomes 800 actually, right? So we can just get this as 800, yes, 800 into 10 raised to minus 5, and hence we can just get that 40 into 1 plus, what is this, 800 into 10 raised to minus 5, मतलब 3 डिजिट्स अगर पॉइंट पीछे शिफ्ट कर देंगे या 5 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.08। करेक्ट है। देखो यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 और 5, मतलब 0.008 आएगा, सॉरी। So we can say that it will be 0.008 in this way, and then we can just try to find out the final value. If we just open the bracket, then we can be able to get this 40 plus 40 into 0.008, so that we get this 40 plus, yes, 40 into 8 कितना होता है 320, right? And if we just shift the decimal point 3 digits in the right side, sorry, left side, so we get this 0.32 as it is, and hence we can get this as 40.32 centimeter square as a final value of the area of the hole. Getting it? Yes. सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं आएगा, 40.32 आएगा कोशिश। ओके, yes, okay. Let me check whether you understood this concept or not. So let me give another example of the same type. और एक एग्जांपल करो, तुम खुद से करो और उसका आंसर चैट बॉक्स में डालो फटाफट। A hollow sphere has a volume of 500
centimeter cube at 30 degrees Celsius. Okay. So find its volume at 130 degrees Celsius if the coefficient of linear expansion of its material is suppose yes 5 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. Yes, do it fast. A hollow sphere means this is suppose the hollow sphere which is made up of metal actually. Its volume is मतलब empty space का जो volume है वो यहाँ पे दिया है empty space का volume जो कि यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब है. Okay, so this volume empty space का volume यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और वो भी 30 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है. But when its temperature will become 130 degree Celsius, we want to find out its volume of empty space obviously. ठीक है, ये जो empty space है उसका volume हमको ढूंढ कर निकालना है क्योंकि it is spherical. ये जो hollow sphere है वो भी जरूर expand होगा. When it will be heated at high temperature at 130 degree Celsius temperature, then it will just expand, and not only it's due to expansion, not only its own field volume will increase, but if even ये empty space का volume भी तो increase होगा कि नहीं. तो empty space का volume अगर हमने पहले वाला जो volume है उसको अगर V0 मान लिया और empty space का जो final वाला volume है उसको अगर हमने VT मान लिया, तो what is the relationship between V0 and VT? We can just get that VT is equal to V0 into 1 plus gamma T. Okay. Yes, gamma T. Okay. 501.25, which she is saying. Okay, let us check. See here, Vt is equal to V0 into 1 plus gamma T. But gamma is not given here. So we have to find it out separately. We know that the gamma is equal to 3 times of alpha. So we can just get that gamma is equal to 3 times of alpha, where alpha is actually 5 into 10 raised to minus 5. And hence gamma actually becomes 15 into 10 raised to minus 5 here. This is the again per degree Celsius only. तो उसका भी unit वही है, per degree Celsius ही है. Yes, author also have put the answer in chat box. But its answer is 507.5. Okay, let us check. Okay, so see here, Vt is actually going to be equal to V0 into 1 plus gamma into T. अच्छा, वही फॉर्मूला रिपीट हो गया. चलो ठीक है, तो V0 का वैल्यू हमको डालना है यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब and 1 plus gamma here. Gamma is actually going to be 15 into 10 raised to minus 5, and that is to be multiplied with the change in temperature here. See, change in temperature can be found out by just subtracting this 30 degree Celsius from 130 degree Celsius. तो अब यहाँ पे एक्चुअली हमको T नहीं यूज करना है बल्कि डेल्टा T यूज करना है. समझा क्यों? क्योंकि ओरिजिनल टेम्परेचर हियर इज नॉट गोइंग टू बी 0 एक्चुअली. So original temperature is going to be 30 degrees Celsius. So therefore, T has to be replaced by delta T in short. And if we just try to find out delta T separately, then delta T can be written to be equal to T2 minus T1, where T2 is going to be the final temperature, which is 130 degrees Celsius, minus T1 is the initial temperature, which is 30 degrees Celsius. So 130 minus 30 comes out to be 100 degrees Celsius only. So this is the original temperature, change in temperature actually. So if you just put this here, तो 100 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसमें मिलेगा 500 into 1 plus what is this 15 into 100. So it will become 1500, right? So this is 1500 into 10 raised to minus 5. And if we just simplify this further,
So 500 into 1 is 500 plus here if you just open the bracket, then we can get this 500 into 1500 into 10 raised to minus 4. Okay, which makes it, sorry, minus 5. Okay, which makes it as 500 kept as it is plus 500 into 1500. How much it comes out to be? So 5 into 15 is 75. So here it is 75 and 00 4 bar aa jayega. And that is multiplied by 10 raised to minus 5, because of which the decimal point will just shift 5 digits at the left side. So 1, 2, 3, 4, and 5. That means 7.5 will be the product here. So that we can just get this as 500 plus 7.5, which actually comes out to be 507.5. And obviously unity is going to be centimeter cube only. So we can just get this as 507.5 centimeter cube, which is going to be the correct answer. Yes. Okay. So in this way we can use that. अभी इसमें समझने जैसी बात क्या है, इसमें हमको पता है. What we understood here, the important thing to understand here is that we can use the volume of empty space as V naught, even if it is there is nothing. मतलब यहाँ पे empty space का वॉल्यूम जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, उसको हम V naught बोल सकते हैं. और इस मेटल का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो इस एम्प्टी स्पेस के वॉल्यूम का एक्सपेंशन निकालने के लिए यूज कर सकती है. देखो ठीक से, ये बहुत स्ट्रेंज बात है. तो एक्चुअली इट इज वेरी स्ट्रेंज, बट इट इज ट्रू, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट that we can use the volume of empty space at low temperature here, and here volume of empty space at high temperature can be found out, but here we are not using the coefficient of expansion of that empty space here, but we are using the coefficient of expansion of metal which contains that empty space here. तो उस empty space का नहीं, बल्कि वो empty space जिससे surround किया हुआ है उस material का coefficient of expansion हम यहाँ पे use कर रहे हैं, but still we are going to get the expansion in that empty space. ठीक है. तो ये बहुत काम में आएगा हमको आगे चल के, क्योंकि जब हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड अलग से एक्सपांड होता है और सॉलिड अलग से एक्सपांड होता है. दोनों एक्सपांड होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिक्विड कम एक्सपांड होता है और सॉलिड ज्यादा, या कभी उल्टा भी हो सकता है कि सॉलिड ज्यादा एक्सपांड होता है और लिक्विड कम. तो उसके हिसाब से ये जो लिक्विड है, तो liquid in the container may be either it can overflow or it may not overflow. ठीक है. तो इसके बेसिस पे एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं coefficient of apparent expansion, which is only valid for liquid. लिक्विड के केस में हम मोस्टली coefficient of apparent expansion डिराइव करते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है तो वो हम कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो let us stop this lecture here. Okay, if you have any doubt you can just put it in the chat box, otherwise you can just finish this lecture here. Okay,